सर शेयर का परमिशन दे दीजिए। बैक करो, एक पेज और बैक। Hi everyone. First of all, good afternoon. My name is Rishu Kumar, roll number 14. Now I present PPT of Python string given by Ravi Soni sir. Python string. In Python string are arrays of bytes representing Unicode characters, and however Python does not have a character data type. A single character is simple a string with a length of 1. A square bracket can be used to access eliminate of the string. Eliminate, not eliminate, not eliminate, elements. Yes. The string. Next. A string in Python can be created using single quotes, double quotes, and triple quotes. Yeah, some example of single quotes and double quotes and triple quotes, third quotes. First of creating a string with single quotes, and second is creating a string double quotes, and third is triple quotes, and last creating a string with triple quotes allow multiple lines. आउटपुट जो अभी हम उसको आउटपुट वेलकम, ये सर आउटपुट आया उसका। Next, string concatenation. String concatenation means add string together. Use the plus character to add a variable to another variable. Example: S equal to CIMAGE, P equal to Patna. Print S plus P, CIMAGE Patna. String multiplication. When you multiply a string by an integer, Python returns a new string. This new string is the original string, repeated x number of times, where x is a value of the integer. Example of string multiplication: S equal to CIMAGE, print 5 into S. तो 5 बार प्रिंट किया CIMAGE को. String slicing. Python slicing is about extract a substring from the given string by slicing it respectively from start to end. Example of string slicing: L equal to CIMAGE College Patna. To इस example हुआ इसका. Next. 2 to 10. Yes sir. ठीक. तो फर्स्ट का 2 छोड़ के 10 तक सर प्रिंट किया. 0 1 2 M से लेके 10 तक. सही है. Yes sir. 10 तक देंगे तो 9 तक ना करता है. Yes sir, 9 तक करेगा. Okay. Next, string indexing. String indexing in Python is zero based. The first character is the string has indexing, index 0, the next is index 1, and so on. The index of the last character will be the length of the string means 1. Example of string indexing: A equal to Soni, A equal to capital bracket 0 तो S प्रिंट करेगा, A1 तो फिर 0, A2 तो N, A3 तो I प्रिंट करेगा. It is not capital bracket, it is a big bracket. Okay. Sir, big bracket. Thank you so much sir. और कोई है सिंगल में? Yes sir. Roll number 16. रोल नंबर 16. Yes sir. आपका ग्रुप नहीं है अभी आज? नहीं सर. चलिए ठीक है, तो 16 कीजिए. So my
So my presentation is all about exception handling in Python. As you know my name is Chandra Bhushan from BCA. Now let's begin. Exception handling in Python. Now, things to discuss. As I have categorized the things to discuss in 4 parts. The first one is types of exceptions. Second one is exception clauses. Third one is raising exceptions, and fourth one is user defined exceptions. Now, types of exceptions. Mainly exceptions are of 2 types: syntax error and logical errors. Your topic As we is know that- types of exception or exception? Exception handling, sir. Exception handling. So first you Yes, have sir. to give the introduction about the exception, no? Then after you Yes, have to sir. discuss the types of the Yes, sir. exceptions. Sir, I am giving. Okay. So as we know that, sir, exceptions are events in a program which do not let the program to execute on its proper instructions. Any event that don't allow a program to execute normally are called exceptions. Mr. Chandra Bhushan, say you are giving here the types of exception are 2 types, like a syntax error and a logical error, and Yes, you sir. know very well, okay, that the syntax error does not comes under the types of exception, because okay, syntax error and logical errors are the types of errors, not exception, because the term exception directly represent the logical errors or runtime errors. Okay. Yes, sir. Exception does not represent the syntax error. So इंटरनेट पे एक जगह मिला था कि दोनों का एरर ही होता है, दोनों में दोनों ही टाइप्स हैं एक्सेप्शंस के। नहीं, एरर के टाइप्स दोनों हैं, एक्सेप्शन के दोनों टाइप नहीं। एक्सेप्ट द वर्ड एक्सेप्शन डायरेक्टली रिप्रेजेंट द लॉजिकल एरर। ठीक है। ओके सर। सिंटेक्स एरर Yes, आपके exactly. द्वारा दिया गया है, जो लैंग्वेज का काम होता है अपने डिक्शनरी से मैच करना, उसको पकड़ना। ठीक है। इसके लिए आपको Okay, sir. प्रोग्राम में कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो लैंग्वेज खुद करता है। आप कोई लाइन तो में सर मेरा गलती तो मेरा तो फर्स्ट हैंड डेटा ही खराब हो गया सर, तो फिर से दे दें बाद में। आप आपका ये पहले तो ये सब स्लाइड ही गड़बड़ कर दिए हैं। ठीक है। इसीलिए सर, तो कल दे देते हैं सर। तो आपका क्योंकि ग्रुप सर- भी नहीं है, अब आप ग्रुप के साथ ही देंगे, अपना ग्रुप कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है ना। ओके पहले सर। आप इसको सुधार लीजिए, आपको जितना बताया गया है पहले आप वो देख लें। ठीक है। ओके सर। मैंने एक्सेप्शन में मैंने शुरुआत आपको एरर से किया था, क्लास में भी आप याद कीजिए। पहले एरर Yes, sir. बताया गया था कि एरर होता क्या है, और फिर एरर Yes, के sir. टाइप्स बताए गए थे, और फिर ये भी बताया गया था कि लैंग्वेज उन एरर्स को कैसे हैंडल करेगा। तो सिंटेक्स एरर Yes, बाय sir. डिफॉल्ट बताए थे कि वो उसका काम है, लेकिन लॉजिकल एरर के Yes, लिए sir. आपको जो चैप्टर है वो एक्सेप्शन हैंडलिंग सिखाया गया था। तो एक Yes, बार sir. उसको ठीक से डिस्कस कर लेंगे, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे और अपने ग्रुप के साथ प्रेजेंट होंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास Okay, में sir. हम होप करेंगे कि आप अपने ग्रुप के साथ आएंगे। क्लियर? बिल्कुल सर। यस सर। चलिए ठीक। तो आज